of Army of Teachers. So लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट देखा था बेकिंग सोडा और विनेगर के रिएक्शन का, बट उस टाइम पे हमने उसकी थ्योरी नहीं समझी थी कि एक्चुअली में उस रिएक्शन में होता क्या है. The reaction between baking soda and vinegar is a very fast reaction, and within a flick of second there is a formation of CO2 and CO2 is released. But the question is that what is the theory or what type of chemical reaction is happening with baking soda and vinegar. सो आज की हम वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि आखिरकार उस रिएक्शन में हुआ क्या एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट वाज. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट देयर आर टू थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर. केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसको हम दो नाम से बुलाते हैं. इट हैज टू नेम्स. First is chemical name, second is common name. बेकिंग सोडा जब हम बोलते हैं तो बेकिंग सोडा जो है वो कॉमन नेम में आता है, एंड द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट. Whereas what is the chemical formula of sodium bicarbonate aka baking soda? ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है in order to understand the chemical reaction properly. So the chemical formula of sodium bicarbonate is NaHCO3. Next जो हमारा स्टार था that is vinegar. Again, vinegar is a common name and the chemical name of vinegar is acetic acid. And what is the chemical formula of acetic acid? Well, it is CH3COOH. Now, अब बात आती है chemical reaction की. When a baking soda means NaCHO3 reacts with CH3COOH, then what is the formation? तो क्या फॉर्म होता है? इस रिएक्शन को हम दो स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. वी कैन ब्रेक डाउन दिस रिएक्शन इनटू टू स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज द सोडियम फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट is getting replaced from the formula with the hydrogen present in acetic acid. तो जो हाइड्रोजन है, सपोज दिस इज द हाइड्रोजन. ओके, नाउ दिस हाइड्रोजन एंड दिस Na, they are changing their position. This hydrogen is moving from here and coming here, whereas this sodium from sodium bicarbonate is moving out and coming in the place of a hydrogen. This is called double displacement. That sodium is also getting displaced and hydrogen is also getting displaced. Both of the substances are getting displaced at the same time and displacing each other. This is called as double displacement reaction. Now जब सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा या फिर हाइड्रोजन सोडियम को डिस्प्लेस करेगा तो क्या सब्सटेंस फॉर्म होंगे? वेल, आपके सोडियम एसीटेट एंड कार्बोनिक एसिड, ये दो सब्सटेंसेस जो है उनका फॉर्मेशन होगा. नाउ कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? और फॉर्मूला फॉर कार्बोनिक एसिड इज H2CO3 and the formula for sodium acetate is NaC2H3O2. So when
baking soda reacts with vinegar, then there is a formation. Then the first step is the double displacement reaction in which sodium acetate and carbonic acid is formed. Now here carbonic acid is unstable. यहाँ पे आपका जो कार्बोनिक एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है और हमें पता है कि हमारी लाइफ में अगर अनस्टेबिलिटी है या अनबैलेंस है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ क्या हो. इफ दिस इज अनबैलेंस देन हम उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे. इफ दिस इज अनस्टेबिलिटी देन वी विल ट्राई टू मेक इट स्टेबल, राइट. Similarly, carbonic acid undergoes a reaction called as decomposition reaction in order to become more stable. Now, what is decomposition reaction? Well, decomposition reaction is nothing but a reaction where a substance or a compound breaks down into smaller substances or smaller parts or smaller components is called as decomposition reaction. Now, here the second step is decomposition reaction. Since the carbonic acid is unstable, it will try to become stable by undergoing decomposition reaction. And it is because of this decomposition reaction CO2, carbon dioxide gas is released. And when you observe that experiment, then in the bottom of the water bottle you saw the formation of some bubbles, isn't it? So what are those bubbles? Those bubbles were nothing but CO2 bubbles. And then CO2 gas moves up, and when CO2 gas moves up it came in contact with the balloon and hence the balloon blow up. At the same time, when you observe at the bottom there was a formation of a water, there was a presence of a water. So when a carbonic acid which is unstable tries to become stable, undergoes the decomposition reaction. Mainly it breaks down into two parts. From H2CO3 to it breaks down into CO2, that is carbon dioxide gas, as well as your H2O water. This is how the whole process happened, or the theory behind the experiment that we done in the part 1 video. If you haven't checked out the part 1 video, then check out the part 1 video. The whole experiment we have explained in that. And if you like the content and if you want to learn more with us, then join us by putting the subscribe button. By pressing the subscribe button, you can join Army of Teachers and become an army with us.